दुआएं जुड़ती है। मेरी मदर एक खुद टीचर थी, वो हमेशा कहा करती थी कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाए। मैं यहाँ पे यूथ इको समिट में आई हूँ दिल्ली में, which is basically on navigating e-waste challenge. So let's see the summit. ये e-waste is a major problem in India right now and it is increasing. तो किस तरह से e-waste को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि कम से कम e-waste हमारा लैंडफिल पे जाए और वो कम पोल्यूट करे एनवायरमेंट को। तो आई एम रियली हैप्पी, यहाँ पे इतने स्कूल के बच्चे आए हैं, यंग माइंड्स आए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेके आए हैं। This is the structure of a man, which actually represents that this person is actually surrounded by materialistic things, and this headphone symbolizes that he doesn't actually care about what is happening around him. Yes. So this message, we want to spread this message that people should remove their headphones, should socialize with people, should interact with people, and should be conscious about the reality that is happening around. So actually this model's name is Absolute Rhythms, which means sculpting and artistry. It helps farmers to irrigate the farms. पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, प्लास्टिक को दूर हटाना है। Buy the product which is required by you only. There is no need of purchasing iPhone 15. You have iPhone 14. You don't just the new product launch is there. You don't need it, but you are taking 90% of the e-waste. But the problem with them is also that where they're dumping it. They're dumping it into landfills, which is apparently depleting the resources available in our country. So e-waste is not something that the older generation should be facing. At the end of the day, it is our generation who would be the most affected by it, and the coming generations. Streamlining the process of recycling e-waste. How we can do that? Basically, there is an organization that goes by the name Scrap Uncle that is doing similar work. And he's also from Australia. It's great to be here on behalf of the United Nations to speak with you at this summit. Firstly, my thanks to the organisers, the Bajaj Foundation and the Ministry of Electronics and Information Technology. E-waste is a huge and growing problem, as you know, because you're trying to find solutions to those problems. It's leading to enormous environmental degradation, it's leading to serious health risks to us, to humans, and of course it's leading to the loss and mismanagement of economic resources. There's downsides as well, and one of that is disposing of them when we no longer need them. India is having a particular problem. It's a tech pioneer, but that also means, unfortunately, that it has one of the highest rates of e-waste in the world, and in fact it's a huge global problem. Our last most reliable statistics show that 6 kilos per person for each and every one of us, you and me, 6 kilos per person of electronic waste. That's enormous. Just think about that.
And that number is growing. It's been growing for the whole last decade. So we have to focus on getting young people to solve those problems. You are the future, so it's important to have you at the forefront of changing those issues. Because studies show that young people are more likely to understand the gravity of our environmental problems, more passionate about finding solutions, and more likely to think outside the box. What I encourage you to do is to get on a UN app. It's called Act Now, un.org/Act Now. Record the projects, the presentations, the sculptures, the jingles, the cool things that you're doing. Exchange them with other people around the world. Devices that can be harmful if not disposed properly. Mercury fumes. Mercury is correct. There's two more. Lead. Yes, and one more. Okay, she answered. How many metric tons of e-waste are generated globally each year? Now it's around 53 million metric tons. Well done. Round of applause. What is the most commonly recycled material in electronic devices? Steel. Steel is the right answer. Can you name one rare or precious metal commonly found in electronic devices? That is one. There are three more. And silver. That's also one. Two more. Platinum. Yes, and one more. It's palladium. Give yourselves a round of applause. One popular method for recycling e-waste materials. Into pieces and Yes, keep going. we can separate the metals and the materials that are not recycled properly with each other. She's fantastic. How can electronic waste impact groundwater if not managed properly? Hazardous materials from e-waste can leach into groundwater, contaminating it and posing health risks, was the correct answer. What percentage of global e-waste is estimated to be recycled each year? 7.4. That is correct. Which year was the Basel Convention amended to include a specific entry for e-waste? It was adopted in 2019. Besides the Basel Convention, name one other international agreement addressing e-waste. Stockholm! To moderate a panel before you guys, because you are the future change makers and the future of tomorrow. और आप लोगों को ही ध्यान रखना है अब धरती का और पूरे planet का. I would like to invite first the first panelist, who's a business leader, Mr. Arijit Talapatra, who is the Chief Executive Officer of Transient India. Transient India has brands like Techno Mobile and Itel under them, with a $3.5 billion of sale in the first half of 2023. As an actor, Sonu has predominantly worked in Hindi, Telugu, Tamil and Kannada films. His popular films include Happy New Year, Jodha Akbar, Simba, but perhaps one of the most memorable ones for me is Singh is King. Sonu has not only worked tirelessly during the COVID pandemic, he is a humanitarian who's been taking upon all kinds of causes, including humanitarian work, relief aid, and as you see today, he is here for the environment. He is here to give you a message and to relate to you guys. Can I have a big round of applause and can I welcome Mr. Sonu Sundar? मंच से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है. सो आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. तो मैं नागपुर में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, सो आई वॉज बिटन बाय द एक्टिंग बग और लगा कि एक्टर बनना है. कहाँ से शुरुआत करें पता नहीं था, तो बोला मॉडलिंग से शुरुआत करते हैं. और उस समय मुझे याद है ग्रेवियर मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ करता था.
और उसमें मैंने भाग लिया और मैं पहली दफा इसी स्टेज पर वॉक किया था सिविल कोर्ट की, इसी स्टेज पर, और यहाँ से जर्नी शुरू हुई और मैंने कब बैक एंड कनेक्ट विद यू। Thank you, Mrs. Su. So, electronic waste is something which includes plastic waste, which includes acrylic waste, glass waste, उसमें aluminium होता है, cobalt होता है, everything is there in electronic waste, and it is a new problem of today. हम थोड़ा सा इसको समझ के, we will take a view as Sonu ji is from the community and Arijit ji is from the industry. तो हम हर तरफ का एक व्यू लेंगे कि how electronic waste can be solved as a problem and how we can do it together. So the topic is one world, one family. एक संसार, एक परिवार. What I would like to first, address you, Arijit ji. So as an electronics devices manufacturer, you are still advocating recycling. You keep talking about recycling on every forum. You are making a lot of efforts towards it. But still, the amount of e-waste generated in India is now crossing plastic waste. E-waste अब उससे भी आगे बढ़ रहा है. 3.2 million metric ton electronic waste पैदा करा भारत ने 2020 में. And we are the third largest in the world for generating e-waste. Where do you think, even after recycling efforts and everything, ये gap कहाँ है और where do you feel कि we can close the gap between the community or the government? Almost 155 million smartphones are sold every year. Almost 50 to 60 million feature phones. This is the new market. New phones. Almost 38 to 40 million refurbished phones. So that makes a 250 million a year. And India is growing very, very rapidly. 40% of our consumption is happening in tier 3 and below markets. So you have seen our economy is doing extremely well. Government wants everybody to be digital. It is all about digital India. So more people are using phones. Now it is good morning with a phone and good night with a phone. It is not a person anymore. So now the opportunity is that how do you manage the recycling? It is all about education, how you educate the youngsters, how you educate the consumer, that in a phone, as you rightly said, you have gold. You have gold also, yeah. Yeah, you have gold, you have aluminium, cobalt, silver also. Silver. Then so many batteries. People say battery is wrong, but if it is rightly used, the cobalt and the nickel, the carbon mass, it can be used. It can be. Even plastic can be reused, is what I understand. So you can make it back to pellets. You can make car bumpers. उस phone से आप दोबारा कुछ बना सकते हैं. Only if it is disposed of correctly. So उसका disposal सही होना चाहिए. Absolutely. तो it is all about education कि आप dispose कैसे करते हो और dispose कहाँ करते हो. एक है आपने अपने डस्टबिन में फेंक दिया and it goes. या कबाड़ी में. It goes to a kabadi, which is extremely risky. So it is how you manage the e-waste, and I would really want to thank Pankaj here, Bajaj Foundation, the kind of work they are doing on the entire recycle waste is really commendable. We are there in more than 70 countries, and in recycle, rightly said, one earth. All the companies have huge fight on top line and bottom line, but here everybody has to be together. Because this is the planet we all need to live. And it's a long term, all about sustainability. So that is what it's all about. So you feel educating children and educating everybody to carefully dispose the waste properly. It is one of the most important solutions. जैसे the way save water ads चलती थी, which was more of education, because you cannot go to somebody's bathroom and switch off the tap. Similarly, you can't go to someone's house and throw the waste properly. It is the conscious education that they need to be more responsible towards. So on the same front, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा भाई कि what do you feel? Is it the responsibility of, because कहीं लोग आप समाज के लिए बहुत काम करते हैं,
everybody knows that you're working so much, you're helping so many people and solving so many problems. Is commendable. But a big round of applause for that. For him working so much for the nation, for mankind, for humanity. Now, what do you feel? Because a lot of times when I'm chatting with children or other people, even adults, sometimes people come back and say, इसमें मेरा क्या गलती है? सरकार करेगी, the government will do it, or this person will do it. So, what is your thought on that? Why did you start doing it? Why didn't you also blame the government? What do you feel about it? I feel that you're right. We always say that we have elected people and that's their responsibility to do it, and we somewhere shy away from the responsibilities that we need to take on our shoulders. So it's very, very important to make sure बस काम चाहे आपको लेकिन करूँगा मैं. So I think जब आप दूसरे का काम को अपना काम समझते हैं तो एक अलग तरह की एनर्जी आती है आपके अंदर. So I think that makes half the battle won. So when you talk about such good initiative that you have taken about e-waste, I think it's something that we learn every single day. आप जब मुझे पीछे जो एक एग्जीबिशन चल रहा था, मैं गया तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं हर एक स्टॉल पे जाऊं. कुछ स्टॉल्स पे पहुंच पाया, कुछ स्टॉल्स पे नहीं पहुंच पाया, पर जितना भी मैं समय वहां बिता पाया तो आई वाज very, very impressed. I was very keen to learn from you guys. I think you are the real teachers. You are the one who are going to teach us कि बॉस ऐसे करना है, इसके ऐसे ध्यान रखना है. ऐसे you have to make this world a better place to live in. So, today when we get somewhere stuck in the technology, somewhere we go to our youngsters, kids, क्या बताना कैसे हम like ऐसे से हो जाएगा. So I mean they are much more sharper than us. Only thing is there are too many things happening around them कि भाई इतनी चीजें हो रही हैं, somewhere they lose that focus and that takes a back seat. So I feel in today's world there should be, अगर हमें history geography होता था तो कुछ ऐसा e-waste type का भी एक होना चाहिए कि भाई जहाँ पे आप everyone studies about it. It's a regular thing. It should happen. It's not about one something that happens and Pankaj Bhai takes his move to make it happen. I think it should be a part of our syllabus that everyone is aware कि कैसे होता है, कैसे करना है, and it passes from one generation to other. So I feel it's a great learning for all of us कि हम लोग हमारे किड्स बोलते हैं कि नया लैपटॉप लेना है, नया फोन लेना है, हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि पुराने का क्या करेगा. So I think we need to get the answer from them. जब वो बताएं कि मैं नया फोन तो लेने वाला हूँ या मैं नई चीज तो लेने वाला हूँ, लेकिन मैं पुराने का क्या करूँगा, जब उनके पास वो जवाब होगा तो I think हमारे पास जवाब खुद ब खुद हो जाएगा. तो I think it's a way we become good students, good teachers for them and spread this message across. So your message is basically that it is a collective responsibility. Teachers should participate, youth should participate. मैं कोविड के समय मैंने एक कविता लिखी थी, उसका एक पैरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. It was किसी और की कैसे है जिम्मेदारी, किसी और की कैसे है जिम्मेदारी, तू ही नागरिक, तू ही अधिकारी, तू ही मालिक, तू ही कर्मचारी, तू इस ब्रह्मांड का उत्तरदाता. So your message is something on those notes. I feel that how we've been speaking to all the educators and the guardians which are here today along with the children, that please include modules, include e-waste and other environmental issues in your schools as subjects and teach this to children and make them more conscious, make them more aware. क्योंकि race to art देख के मुझे भी ये लगा, बच्चे हमसे ज़्यादा तैयार हैं. They are more ready than us. We need to guide them, we need to inform them. Once we inform them, they will definitely take. और मुझे लगता है कि जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में थे तो इतनी डाइवर्जन्स नहीं होती थी. अभी इतनी चीजें आ गई आसपास. आपको बोलते कि जब आज हम रील्स की बात करें 10 सेकंड के अंदर डाइवर्जन अगर आप नहीं पकड़ा तो कहीं और भाग जाता दिमाग, क्योंकि इतनी चीजें आपके पास हो. और उसके बीच में अगर आप इंस्पायर हो भी जाएंगे कि भैया मैं इस पे कुछ करना चाहता हूँ, जैसे ही आप क्लासरूम से बाहर निकलेंगे कुछ ऐसी 4 चीजें आ जाएंगी और इन्वेस्ट होगा बैक बेंच पे चले जाएगा, भूल जाएंगे उसको. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी you have to hammer that thing regularly because it karna hai, this is a part of your living, and I think that will spread the word across. Yeah, absolutely, that's wonderful. So I would like to ask you, Arijit ji, that what is one of the, क्योंकि अभी सब बच्चों को समझ आ रहा है, I think what is the e-waste problem. If you all are understanding, give me a big yeah. I think we need to now tell them about the solution.
जो आवाज इनकी आई है, मुझे लगता है हम उधर बैठ जाते हैं, इनके लिए आ गया। So let's then have a quick understanding towards the solution. One is responsibly disposing it off. That is the solution. जब हम responsible disposal की बात करते हैं, भारत सरकार ने अब 2007, because it's a new problem, they have come out with e-waste rules and e-waste policy in 2016-17. Now there is a mechanism in the country. हर शहर में वो एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. I would like to know more from you, since you are from the industry, that what is the solution for the country that the government is trying to make, and how can all the children and everyone benefit from this kind of an e-waste collection or recycling? First of all, I would like to thank the schools. When I was a student, I did not know what e-waste was. ठीक है, तो मोबाइल नहीं होता था पर ई-वेस्ट होता था. क्वांटिटी कम होता था, बहुत कम होता था आपसे, पर ई-वेस्ट होता था. जैसे पंखे होते थे. बट ई-वेस्ट क्या है किसी को पता नहीं था. एटलीस्ट नाउ द स्टूडेंट्स नो व्हाट इज ई-वेस्ट, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी. हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, क्या है सस्टेनेबिलिटी. एंड सबसे बड़ी जो चीज है, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, द एंटायर ई-वेस्ट कलेक्शन is the most important thing, but it starts from India. बहुत बड़ा है, 1.4 बिलियन. आज ही हमने पेपर में पढ़ा कि चाइना का सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर पॉपुलेशन हैज ग्रोन एंड वी आर ग्रोइंग. सो बहुत जल्दी आएगा कि हमारा पॉपुलेशन और चाइना के पॉपुलेशन में काफी डिफरेंस हो जाएगा. तो इतनी बड़ी मार्केट में जो एक कैटेगरी इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसको संभालना आसान काम नहीं है. तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है अवेयरनेस. और जैसे पंकज ने बोला, अवेयरनेस स्टार्ट्स विद सेल्फ. इट इज नॉट दैट हु इज मैनेजिंग इट. गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है, कोई एजेंसी मैनेज कर रहा है, वो एजेंसी के पास प्रॉपर लाइसेंस है या प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, वो एजेंसी उसको एज अ बिजनेस कर रहा है या एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है. बिकॉज बट कैन वी नाउ अप्रोच, अब बच्चों को आज दे वांट टू थ्रो सम ई-वेस्ट, क्या गूगल पे कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइज कोई मिलेगा या कहीं कोई देयर इज एनी काइंड ऑफ अ मेथड फॉर दैट? आपको लगता है ये सॉल्यूशंस अब ऐसी कंपनियां खुली हैं या व्हाट डू यू फील? बजाज फाउंडेशन ऐसी एक कंपनी है. सो आई बिकॉज आई हैव कम फॉर अ बजाज फाउंडेशन इवेंट, आई विल, इट्स नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट देम टाइम एंड अगेन, बट देयर आर फ्यू वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस हु आर मैनेजिंग दिस ई-वेस्ट लाइक क्रेजी, बिकॉज इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कोई भी चीज दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर में करना बहुत आसान है, बट आप एक टियर 6 मार्केट में, एक छोटे तहसील में अगर आप देखेंगे, हमारी मोबाइल पेनिट्रेशन जो है करीब करीब 82-83% है. ऑलमोस्ट 700,000 मिलियन लोग हमारे मोबाइल यूज करते हैं. 700 मिलियन लोग आज जीपीएस वो कर रहे हैं, नेटवर्क डेटा यूज कर रहे हैं. इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करना, ये पूरा ई-वेस्ट मैनेज करना, और उसको सिर्फ कलेक्ट करना नहीं, उसको कलेक्ट करके कैसे रीयूज करना है. सो गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, बट इट स्टार्ट्स विद मी, द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मे बी अ पंचायत, अ तहसील, the big schools of the top cities, because this education has to flow, and government also is doing a lot just to spread this education. Correct. So I think what he's saying is there are large companies now. You can search for them. You can find these companies who are authorized by the government, like he's saying. और उन लोगों को सरकार ने लाइसेंस दिया है for recycling, for collecting e-waste. You can Google these companies and you can, like he's saying, all these large companies are now available. So solution up khada hai. You need to just be aware that there are these companies and you have to just go ahead and contact them and dispose of your waste responsibly. So आपसे मैं ये सोनू भाई से हम ये पूछना और समझना चाह रहे हैं that for the environment, आपने जानवरों के लिए बहुत काम किया, मैंने देखा. आपने एक समय पे आई थिंक आपने किसी को बोला कि अपनी मूवी की फीस ना देके मुझे कोई
हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स इतने दे दीजिए, क्या आई डोंट नो ये बात सच है नहीं है, और वो क्या ट्रीटमेंट मांगा क्या था. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज a message is also to learn from people like the both of them who are doing a lot of community service, and to learn the thought of being kind, the thought of being responsible. So what is it that you tell me a little more about this story, ताकि हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले that हमें भी आपकी तरह अच्छा बनना है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है, वेस्ट का ध्यान रखना है, लोगों का ध्यान रखना है. जानवर आप तो सभी कुछ करते हैं. मैं जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, इंजीनियर बन के सोचा कि एक्टर बनने मुंबई पहुंचते हैं, एक्टर भी बन गए. आई वर्क इन ऑल दीज डिफरेंट लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, इंग्लिश, बॉलीवुड, सब जगह काम किया. एंड आई थॉट कि ये तो बहुत बड़ी बात है, लोग आपको जानने लगे, आप फिल्म एक्टर बन गए हो, यही तो सपना पूरा करने आए थे मुंबई. सो वी ऑलवेज लिव्ड इन दोज ड्रीम्स. वो एक बोलते हैं ना कि एक ऐसी दुनिया जो हमें लगता है कि यार यही सच और यही तो करने आए थे. एंड देन कोविड हैपेंड. सो जब कोविड में मैं आम जनता से जुड़ा, जिनको मैं जानता भी नहीं था, और उनके लिए पता नहीं था कैसे मदद करनी है, घर कैसे भेजना है, उनको खाना कैसे दिलाना है, उनको जॉब्स कैसे दिलाने हैं, उनका इलाज कैसे करना है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है. एवरीथिंग लेड टू एक एक चीज़ करके जुड़ना शुरू हुआ. मैंने कोशिश करनी शुरू की, और फिर एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आज भी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा छोटा शहर या कोई छोटा कस्बा होगा जहाँ पे हमारे लोग जिनको हमने भेजा था या मदद की थी वो नहीं रहते होंगे, जो अभी एक तरह से स्विच चैरिटी फाउंडेशन का हिस्सा बन चुके हैं, एक वॉरियर बन चुके हैं कि हमें कोई किसी को दवाई पहुंचानी हो, किसी को कॉन्सेंट्रेटर भिजवाना हो, तो हम फोन करते हो, बेचारा शायद 200 रुपये दिहाड़ी करने वाला मजदूर होकर अपनी साइकिल पर वो चीज़ उठाकर देने जाता है. सो आई थिंक दिस इज हाउ द होल नेटवर्क हैपेंड. बट आप करते जाते हो, मतलब व्हाट इज मोटिवेटिंग यू? हाउ डू, अभी इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द चिल्ड्रन टू डू समथिंग नाइस एंड काइंड, व्हाट, हाउ डू दे कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग इट? हाउ डू दे गेट मोटिवेटेड? लाइक ये खुशी मिलती है आपको, मतलब इट्स अ डिफरेंट हाई व्हेन यू चेंज योर लाइफ. इट्स अ डिफरेंट हाई. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक फिल्म की शूट कर रहा था, पृथ्वीराज की. 80% पिक्चर खत्म हो चुकी थी. यशराज की फिल्म थी, बड़े बड़े बैनर्स में काम करना, बड़े बड़े सेट्स थे. और उसके बाद कोविड हुआ. जब कोविड हुआ तो सब शूटिंग्स बंद हो गई, और मेरी कोविड की जर्नी शुरू हुई. आम जनता से जुड़ना शुरू हुआ. बड़ी अच्छी लगी, लोगों की जिंदगी बचाना अच्छा लगा. और उसके बाद जब कोविड के अंदर वापस रिलैक्सेशन हुए और मैं वापस उसी सेट पे गया, तो भाई मुझे वो सेट एकदम छोटा लगने लगा. वही सेट था इतना बड़ा, लेकिन लगा यार ये दुनिया तो छोटी है. मैं इसी के पीछे इतने साल भागता रहा, काम कर रहा हूँ, अभी भी फिल्म्स कर रहा हूँ. पर जब आप एक आम इंसान की जिंदगी बदल सकते हो, जिसको आप जानते भी नहीं, जिसको आप शायद दोबारा जिंदगी में मिलोगे भी नहीं, लेकिन when you put an effort towards changing that life, saving that life, the kind of happiness that you get is you can't put in words. When people used to ask me, यार तुम कैसे करते हैं? So I always used to say, I don't think twice calling somebody I don't know for somebody I don't know. कि जब मैं आपको फोन करूँगा, बने भाई उसका यार इलाज करवाना है, चलो मुझे हॉस्पिटल भेज दो, बाकी मैं करवा दूंगा, तो आप एक बार जाएंगे. फिर दोबारा एक फोन आएगा, उसका भी करवाना है, चलो आप दूसरी बार मेरे लिए उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाओगे. फिर थर्ड दफा शायद मैं सोचूंगा कि यार मैं फोन करूँ या ना करूँ, मगर बोले यार हर 2 मिनट में फोन कर देता बॉस, ऐसा कैसे काम चलेगा. सो मैं करता गया, और मैं हर बार रिक्वेस्ट करता गया कि भैया मैं इस आदमी को जानता हूँ, लेकिन इसकी हेल्प करनी है, और हेल्प होती गई. और विश्वास मानिए कि जब मैंने फिल्म की तो कई बार नेगेटिव रोल्स भी किए. दबंग थी, कई फिल्म थी. तो जब बहुत बड़े बड़े ब्रांड से मेरी नेगोशिएशंस होती थी उस समय, तो कई बार ब्रांड बोलते अरे यार बंदा बड़ा अच्छा है यार, लेकिन उसने नेगेटिव रोल किया ना, हमारी शायद ब्रांड को सूट नहीं करेगा, हम कुछ और लेते हैं. तो नहीं बनता था कई बार काम. और जब कोविड हुआ तो मैंने ऐसा कोई ब्रांड पिछले 20 साल में जिसके लिए मैंने ऑडिशंस दिए, नेगोशिएशन दिए, ऐसा कोई ब्रांड नहीं बचा जिसको मैंने साइन किया और कम से कम 25 गुना ज्यादा पैसे में साइन किया उनके साथ. सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन आपके साथ दुआएं जुड़ती है. मेरी मदर एक खुद टीचर थी. वो हमेशा कहा करती थी कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा.
सोचते हैं कि यार अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं छोटी हूँ यार, अभी तो स्कूल में हूँ, अभी मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा या बहुत बड़ी बनूंगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, बड़ी कंपनीज खोलूंगी और उसके बाद मैं मदद करना शुरू करूंगी. सो आई वुड लाइक टू से डोंट वेट फॉर दैट टाइम. अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मॉम मुझे इस बार बर्थडे नहीं मनाना, मुझे किसी ओल्ड एज होम में जाके कुछ काम करना है, मुझे किसी छोटे ऑर्फनेज में जाके उनके साथ कुछ उनको क्लोथ दे के आने हैं, उनको शूज दे के आने हैं. आप देखेंगे कि आपका वो बर्थडे आज तक का सबसे बढ़िया बर्थडे होगा. सो ट्राई टू लिव फॉर अदर्स. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लर्न इन ऑल दीज इयर्स. आई स्टिल आई एम लर्निंग. आज भी घर पे लोग 500-600 लोग हर रोज मेरे घर के बाहर आते हैं. मुझे पता नहीं मैं कि कितने लोगों की हेल्प कर पाता हूँ या नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश हर किसी के लिए कहता हूँ. और मैं हमेशा कहता हूँ कि दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं. एक होता है उम्मीद और दूसरा होता है कोशिश. कि अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं, चाहे कितने भी छोटे हो, बड़े बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, इंडस्ट्रीज कुछ भी हो, अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं, सो यू आर लिविंग एन इनकम्प्लीट लाइफ. और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है. फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे मदद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने दिल से पूछिए कि आपने उसके लिए कोशिश की नहीं की. और अगर आप कोशिश करेंगे तो मदद जरूर होगी और आपको वो हर चीज जरूर मिलेगी जो आपके लिए कोशिश करेंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, घर भेज रहे थे, जॉब दिला रहे थे, जो भी कर रहे थे, सो मुझे मेरा जो फोन था, आज भी वही फोन है जब मैंने पहली दफा जो फोन खरीदा था. जब फोन शुरू हुए थे, वो जो पहला नंबर था, आज भी नंबर है, तो पूरे देश में बटा हुआ हजारों फोन आते रहते हैं, रोज मैसेजेस भी बहुत आते हैं. तो उसमें मुझे एक बार मुझे याद है एक मैसेज आया था कि स्टूडेंट्स फंस गए, मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत बाहर कंट्रीज में पढ़ते थे. तो किसी का मैसेज आया कि सर मेरे जो बच्चे हैं वो किर्गिस्तान में MBBS कर रहे हैं और वो फंसे हुए हैं, उनको प्लीज आप निकालिए. तो मैं कभी किर्गिस्तान गया भी नहीं था और मैंने सुना भी नहीं. मैं क्या किर्गिस्तान पता नहीं कहा, तो मैं इग्नोर कर रहा, दूसरे लोगों को हेल्प करना शुरू किया. तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जहाँ पे किसी एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड और देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ दैट स्टूडेंट. और उसने बोला कि सर आप ही उनको निकाल सकते हो. तो मैंने बोला कि यार मैं कहाँ से निकालूंगा, मैं जानता नहीं. मैंने बोला कि कोशिश करता हूँ. सो देन मैंने थोड़े कनेक्शन ढूंढे यहाँ पे, थोड़े गवर्नमेंट में ढूंढे कि अगर मुझे यहाँ से फ्लाइट भेजनी हो तो कैसे आए. तो उन्होंने बोला कि यार फ्लाइट भेज दोगे पर वहाँ पे लैंडिंग परमिशन नहीं है. तो मैंने वहाँ के एम्बेसडर से कनेक्शन ढूंढा, वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफिस में ढूंढा. तो मैंने तो कनेक्शन जोड़ते जोड़ते जब वो बना तो एक स्टेज पे आके मैं वो परमिशन ले पाया. तो फ्लाइट उड़ी और हम लोग करीबन 180 बच्चों को वहाँ से लेके आए. और जब वो चेन चेन शुरू हुई, मुझे याद है कि हजारों की गिनती मेरे मैसेजेस ऐसे टिंग 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 फोन बजता था. मैंने बोला यार किसको जवाब दूं. तो मैंने हर एक कंट्री के 2-2, 3-3 रिप्रेजेंटेटिव बनाए और 6 कंट्रीज जुड़े थे. उस समय 6 कंट्री से करीबन हम 12,500 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कराया था. किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया. तो ये बच्चे थे अपने आप जुड़े, अपने आप लीडर्स बने, अपने आप उनको लेके आया गया एयरपोर्ट से, वहां से इवैक्यूएशन हुई, फ्लाइट्स गई. सो मकसद ये था कि अगर मैं छोड़ देता कि यार मुझे पता ही नहीं कैसे करना है, तो आई वुड हैव नेवर लर्नड. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी व्हिच आई गॉट फ्रॉम दैट होल एक्सपीरियंस एंड व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू आल्सो. कभी मैं सोची कि मेरे दायरे ये हैं कि बॉस मुझे तो ये सिखाया गया है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो डॉक्टर का ही काम आता है, मुझे बताओगे तो मैं दवाई दूंगा. लेकिन डॉक्टर का काम इंजीनियर वाला काम भी कर सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है. सो डोंट सेट योर पैरामीटर्स, बी समवन कि बॉस कोई भी जिंदगी में काम दोगे मैं कर दूंगा. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर मेंट टू. और जो मैंने आपके बाहर करतब देखे हैं ई वेस्ट की दुनिया के, जो आपने मैसेजेस बाहर बनाए हैं पूरी एग्जीबिशन में, बस आप तो यार दुनिया पूरी जो है जंग जीत जाओगे. बस लगे रहो. So I think the message from the panel is very clear. Everyone should become more conscious. Everyone's efforts, आपका कोई भी effort है, it always matters. आप अपने दायरों को मत देखिए. Once you start तो अपने आप होगा. सारा संसार अपने आप लग जाएगा, चीजें अपने आप होंगी. On that note and that good thought, we will close this panel. Thank you for being with us today. Thank you for being with us today to both of you.
and now I think we'll follow with the kids awards and ceremonies and everything after this. And on a parting note, just want to tell you कि आप सब लोग बहुत मेहनत करते हो. कई बार किसी को कामयाबी जल्दी मिलती है, कई बार किसी को थोड़ा वक्त लगता है कामयाब होने में. कोई बहुत फर्स्ट आता है, कोई 10th आता है. सो मैं उन सबके लिए हमेशा जब भी जाता हूँ एक मैसेज जरूर देता हूँ, क्योंकि मैं कभी फर्स्ट नहीं आता था, मैं कोई 15-20 टाइप ही आता हुआ करता था. तो मैं उन सब लोगों को, आप लोगों के मैसेज देना चाहता हूँ कि, और हमेशा देता हूँ मैं जिस भी मंच पे जाता हूँ, कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा. Please, so thank you to our panelists and guest speakers. सोनू भाई अभी यही है, आप लोग सबको कुछ अवार्ड भी देंगे. So now we'll move towards the award ceremony.